A wonderful good morning to one and all present here. We'll be starting the session sharp at 11. So thanks for your patience. We'll be starting a unique masterclass on how to attempt MCQ based questions examination with ease. So I am really thankful for your patience. We'll start the session sharp at 11 a.m. Thank you so much.
A wonderful good morning to one and all present here. We'll be starting the session sharp at 11 a.m. Meanwhile, I request everyone, you know, uh, to not post because we are keeping a check. Please maintain audio visual decorum in the class and please do not post uh, any foul language in the chat box. We are keeping a very close check on the same. So we have our resource person, Mr. Sadasan here. He'll be briefing you about the basics and nitty gritties of uh, MCQs, the tips and tricks of an MCQs. So I request everyone. So please be very careful while parking your queries and questions in the chat box. Your school authority, your school management, and VMC management is keeping a close check on what are you posting in the chat box. So please be very very careful. Thank you so much. We'll be starting the session, master class sharp at 11 a.m. Thank you. जब लेकर आए हमारे So, well, it's time to start a unique masterclass on MCQ based, questions and examinations. How to attempt those questions, how to attempt those examinations with ease. So, Sat sir, am I audible? Yeah, very much. Great. Okay. So, without any delay, I would like to start this workshop. Again, I would like to reiterate that students, we all welcome you here. You are here to learn something new, to score really well in your in upcoming
in your term one master classes, term one MCQ based examination, CBSE based examination as well. Plus, we are very particular about the decorum we have to maintain during this master class. Your school management, BMC management is keeping a close check, and we will take a strict action if you'll behave you know not properly, not in a decent manner. So please be very very careful and particular about uh, mentioning whatever you're mentioning in the chat boxes. Also, the chat box, the option of chat box is to ask questions. Feel free to ask questions. Try to make this session as interactive as possible. Park all your queries, all your your concerns in the chat box. So let me take an honor to introduce the resource person here. So Mr. Saad Hassan, he's a very, very, he's a prominent face, prominent faculty at Vidya Mandir classes. He is, a BTech from NIT Jaipur, and he has done, his post graduation from North Carolina University, USA, and he is an expert on MCQs. So today, with this masterclass, he'll be talking about what you should, take care while attempting MCQ based questions, and how to, fill the OMR as per the CBSE guidelines. I hope you must have received the information, from your schools as well, but with the legacy and expertise of more than 36 years, Vidya Mandir classes, VMC is helping, grooming, upskilling students to attempt MCQ based competitive exams like IIT, J mains, and NEET. So we are helping students to understand the do's and don'ts and nitty gritties of MCQs. So over to you, sir. Well, Thank you so much. hello. Thank you, Robert, so much for that very generous introduction. So, am I audible? And can you You're clearly say audible. great? And just so that I'll try to first of all check that everything which I'm sharing is there. So, can you see my screen, Robert? Now I can, sir. You Yes, can, I right? can. Oh, okay, great. Okay, all right, Bob. So, thank you so much for that very generous introduction. Hello, folks. Good morning. I'm hoping that everyone there is fine and you're having a great day. I'm hoping that you will have an even more productive Saturday. And now that we have met, and I'd like to take you possibly through in the next hours through the various stages of an MCQ examinations, and when possible I'll also try to help you in sort of trying to overcome the difficulties that generally plagues a student who is confronting these examinations for the first time. So as Babel said, so just a brief thing about me. So I have a BTech in electrical engineering, and I have a master's in applied mathematics from North Carolina State University, and I've been working with Vidyamani classes for about 5 years, and in fact now it's more than 5 years now. Yeah, and so it just so happens that uh, both of us are similar in some respect. Like हम दोनों ना like कुछ respects में similar हैं. So I'll try to keep this conversation bilingual. I'll speak in English as well as in Hindi, so that people don't feel left out, and all those who are here and you're here. So yeah, coming back to the point. So it just so happens that there is some sort of similarity between you and me. Maybe आप में कुछ similarity, and that is that you're going to attempt the examination for the first time in its history is going to be objective, नहीं? आप एक ऐसा एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हैं जो अपनी हिस्ट्री में पहली बार ऑब्जेक्टिव होने वाला है. Now I attempted JEE for the first time when it was transformed into an objective examination. मैंने भी पहली बार जेई तब दी थी जब पहली बार जेई तब दी थी जब पहली बार जेई जो है वो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन बन गया था. उससे पहले जेई सब्जेक्टिव हुआ करता था. I realized that there can be many sort of anxiety. आपको बहुत anxiety हो सकती है कि like, oh gosh, you have studied till now for subjective examinations, and all of a sudden now you're being asked to take up an objective examination which you're not sort of prepared for, or even if not prepared for, like थोड़ा mental barrier है ऐसा कि ओहो क्या होगा यार, like अभी तक तो हम subjective करते आए थे. Well, I'll say that perhaps you can put them to rest. आप
इन सारी एंजाइटीज को, इन सारे क्वेश्चंस को, put them at rest. I'll sincerely advise that if you're listening to this session, you have a pen and a paper handy and note down points which you might find important. It's entirely possible that you might not be able to remember or recollect things that I have to say during the session, and you might miss out on them because well, there is a survey which states that human retentivity is just 66%. लो आप जितना पढ़ रहे होते हैं उसमें सिर्फ 66% आप retain कर पाते हैं एक दिन में. So it's entirely possible that you might miss out on few things. So I'll really recommend that all of you sitting here, please use a pen and a paper. Pen paper use कर लीजिए, and that will be great. Okay, so moving on then. So this whole session is divided into two parts. इस पूरे session को ना दो parts में divide किया. Okay, the first part is in which I'm sort of going to explain that well, how are you going to fill your OMR sheet, because there's a very novel and might I add extraordinary OMR sheet. Like ये जो OMR sheet है बहुत ही नई है, बहुत ही extraordinary है. In fact, I haven't seen such an OMR sheet, and I'm convinced that many people might not have seen such an elaborate OMR sheet in their lives, because what they have tried to do is that they've tried to sort of mask all the mistakes when a general examination generally entails. इन्होंने क्या किया है ना कि जो जनरल एग्जामिनेशन की ओएमआर शीट में कुछ लोग गलतियां कर देते हैं ना, उन सारी गलतियों को मास्क करने की कोशिश की है, छिपाने की कोशिश की है, आपको एक अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश की है कि भाई अब जो यूजुअल गलतियां करते हैं, ट्रैप्स होते हैं, वो आप ना करें. ओके, एंड देयरफॉर जब भी आप किसी मतलब सिंपल सी चीज को ठीक करने की कोशिश करते हैं, then you have to bring in something really complex. तो आप देखेंगे कि that this is complex, not complicated, but yes complex, right? OMR sheet, in fact, to begin with, and this is very novel, बहुत ही नई है, बहुत ही extraordinary piece of thing. And first of all, what I'm going to do is that I'm going to take you through that how you have to fill your OMR sheet, right? Okay. Uh, so first, so it says that here the instruction, and I'm going to go through line by line because this is particularly important that you pay heed to all that they have to say. जो भी वो कह रहे हैं उस पे आप ध्यान दीजिए, ये बहुत important है, because अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो it's entirely possible that you will find yourself doing or committing mistakes that you could have clearly avoided had you paid attention to them. So I'll go through each of these points very slowly. मैं सारे points के through जाऊंगा, धीरे धीरे जाऊंगा, and I'm hoping that I will have your unwavering attention. और मैं hope करूंगा कि आपका attention है, because this is perhaps a very crucial point. So look at this. So it says that a sample of OMR is enclosed with this letter, of course. Now, the second point says that the details of candidate will be pre-filled in the OMR sheet. Now, this is such an extraordinary thing to say. कि आपके पास जो OMR sheet मिलेगी, वो उसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सारा डिटेल जो है वो भर के देंगे. तो क्या भर के देंगे? They will fill your name, they will fill your roll number. Okay, मतलब सब कुछ वो करके देंगे. तो what they're trying to do here is, आप देखिएगा ना, like if you try to see this whole OMR sheet with a view that it has been designed by a skeptic so that people can't use unfair means, तो आपको पता चलेगा कि that why this has been done. So this has been done so that you can't use unfair means. कि भाई किसी और शीट में रिस्पॉन्स भर दिया और फिर लाके दे दिया एग्जामिनर को और बोल दिया कि हाँ ये मेरी है, नाम लिख दिया अपना, राइट? यू कांट डू दिस. आपके नाम की एक शीट होगी, उस पे आपका नाम लिखा होगा, आपका रोल नंबर लिखा होगा, एवरीथिंग विल बी देयर, राइट? So you don't have to fill in your particulars. आपको अपने particulars नहीं बन रहे कि आपका नाम क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, and things like that. You don't have to fill that, right? But you have to write something. आपको कुछ लिखना है, and this is important. So you have to write that. Come to point number 3. So it says that candidate has to write a question paper code in the upper corner in the space provided for the same question paper to be written on question paper, right? So आपको लेकिन स्वयं पे शीट पे ना वो एक क्वेश्चन पेपर कोड लिखना है. ओके, दैट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चन पेपर कोड अलग अलग होंगे. इट कुड बी ABCD, कुछ ऐसा हो सकता है. सो यू कैन सी द राइट हैंड टॉप, देख सकते हैं आप, राइट? सो देयर इज दिस क्वेश्चन पेपर कोड जो आपको लिखना पड़ेगा. फाइन, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू राइट विद योर हैंड्स. ये आपको अपने हाथ से लिखना पड़ेगा. लुक एट द राइट हैंड टॉप. This is something that you have to write. ये आपको लिखना. You don't have to fill in your particulars कि आपका नाम क्या है भाई, आपका रोल नंबर क्या है. No, but you have to do this. Okay. Moving on. We'll come to point number 4. Then he says that then they say that the candidate has to write in his or her own hand that I confirm that all the particulars given above are correct. फिर आपको
अपने हाथ से लिखना पड़ेगा कि दैट ऑल द पर्टिकुलर्स लाइक हियर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि दैट आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट. व्हाट डज दैट मीन? इसको आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि भाई आपका नाम यही है, आपका रोल नंबर यही है, और फिर आपको लिखना पड़ेगा अपनी हैंड राइटिंग में, एंड देन यू हैव टू अटेस्ट, सेल्फ अटेस्ट, आपको खुद का सिग्नेचर करना पड़ेगा, राइट? तो दिस इज देयर वे ऑफ ascertaining योर आइडेंटिटी. ये उनका तरीका है आपकी आइडेंटिटी को ascertain करने का, राइट? इज दैट ओके? Okay, now I'll say that read all these instructions very carefully, because you will see that their first, the rules are very elaborate. Rules जो है वो बहुत ही elaborate है. Two, they're very robust, yes. Three, very equivalential. Equivalential मतलब बहुत ही large, सब कुछ contain करता हुआ. Four, there is strict penalty if you don't subscribe to the if you don't subscribe to these rules. अगर आप इनमें से कोई rules को subscribe नहीं करते तो penalty बहुत बड़ी सी है. Okay, so keep in mind all these points. So what's the fifth point? Fifth point says that, well, only blue and black pen are allowed and ball pen are allowed for your OMR sheet. तो आप जो अपनी OMR sheet भरने वाले हैं, तो either use your blue pen or use a black pen, and both of them should be ballpoint pen. तो या तो आप ब्लू बॉल पॉइंट पेन यूज करेंगे या तो आप ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करेंगे. इट कांट बी बोथ, दोनों नहीं हो सकता. इट कांट बी अ जेल पेन, नहीं हो सकता. इट कांट बी अ पेंसिल, पेंसिल भी नहीं हो सकता. इनफैक्ट आई एम कमिंग टू द पॉइंट नंबर 6, राइट? सो यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. यूज ऑफ पेंसिल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है. आपको पेंसिल यूज नहीं करना है. In fact, if it is found that the candidate used pencil for filling OMR sheet, this will be considered use of unfair means, and action will be taken against the candidate as per the mean rules. तो पेंसिल यूज करना ही नहीं है आपको. हर जगह बॉल पेन यूज करना है, और वो भी या तो ब्लू कलर का होना चाहिए या तो ब्लैक कलर का होना चाहिए. कोई एक बॉल पेन आप यूज करेंगे थ्रू आउट. पेंसिल यूज नहीं करना. अच्छा, पेंसिल क्यों नहीं यूज करना है? दैट आर दे मिलिटेटिंग अगेंस्ट द ग्रेफाइट इंडस्ट्री? आई डिडंट नो. Their idea is that well, it's entirely possible for you to use unfair means when you use pencils, because आप ऐसा सोचे ना कि that well, suppose that you have collaborated with some people at the school and आपने कुछ भी response fill कर दिया and say that that's incorrect, और कोई आपकी आंसर की ले गया और उसने उसको सब रब कर दिया और फिर करेक्ट रिस्पॉन्सेज फिल कर दिए, राइट? which is entirely a possibility. ये तो एक possibility है ही. तो this is something which will not be allowed. ये ऐसी चीज है जो allowed नहीं होने वाली है, right? Are you getting my point? So pencil is just beyond you, is not to be used. And in fact, उन्होंने कहा कि that they will take action as per the rules that they have decided, which also includes an FIR. तो आपका एग्जाम तो कैंसिल हो गई अगर आपको अनफेयर रूल्स में अगर आप implicated होते हैं. Of course, your examination will stand cancelled, and apart from that, an FIR will be launched against you. I don't think that you're in a mood to entertain such laurels so early in your life. So I'm hoping that you will avoid pencil at all costs, and you are going to use blue or black ball pen to answer the OMR sheet, right? Very important part. Okay, so I'll move on to the next slide. Now, this is what a typical OMR sheet looks like. A typical OMR sheet ऐसे दिखती है आपको, right? OMR stands for optical marks response. So this is your roll number and name and date and so on. Pre-filled आएगा. You don't have to do anything. आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना except that you just have to uh, ensure that all the details which are filled correctly. आपको बस ensure करना है कि भाई आपका नाम ठीक है, roll number ठीक है, and that's it. Okay. Now come to the way of filling that OMR sheet. OMR sheet भरने के तरीके पे आते हैं. तो अब जैसे अगर रिस्पॉन्स ए है, तो जो ए का आपका बबल है ना, या ओवल जो बना हुआ है आपके पास, यू हैव टू डार्कन इट कंप्लीटली. आपको इसको पूरा डार्क करना पड़ेगा. यू कांट फिल इट पार्शियली. आप पार्शियली फिल नहीं कर सकते. ओके, डोंट डू दिस. देखिए, इट्स एन ऑप्टिकल रीडर है. What it essentially reads is that does light pass through? क्या लाइट पास कर रही है? तो अगर उस ऑप्शन से लाइट पास कर रही है तो दे विल कंसिडर दैट एज अनमार्क्ड. तो उस ऑप्शन को अनमार्क्ड समझेंगे, राइट? तो what you have to essentially do is that you have to blacken, or if you're using a blue pen तो आप ब्लू से कर सकते हैं.
तो द होल थिंग इनसाइड द ओवल आपको पूरा ब्लैक करना होगा पूरे ओवल के अंदर. इज दैट ओके? या एंड मार्क द करेक्ट रिस्पॉन्स. अगर ए है तो ए वाला ही ओवल आपको ठीक करना होगा. इज दैट ओके? समथिंग लाइक दैट, राइट? इज दैट ओके? Okay. Now, in fact, you will see that, as I said, that what they have tried to do is that they have tried to overcome the lacunas which were there in other MCQ examinations that were held earlier in India. So, India में या कहीं भी आप कोई भी MCQ examination देंगे. So, for example, I have taken a few MCQ examinations which includes JEE and GRE. Uh, well, GRE is a computer-based test, तो उसमें तो नहीं था. But JEE was for me was a pencil paper test. तो उसमें मार्क करना होता है ना. तो उसमें मेरे से कई बार ऐसा हो गया था कि लाइक मुझे करना था मार्क ए और मैंने बी मार्क कर दिया. तो व्हाट दे हैव ट्राइड टू डू इज दैट दे हैव ट्राइड टू क्रिएट सिस्टम और दे हैव ट्राइड टू क्रिएट policies in place that eventually will help you to even get through the mistakes that you have made while marking the OMR sheet. So for example, look at this. तो आपको OMR sheet में क्या करना है? जैसे अगर आपके पास रिस्पॉन्स आता है बी, तो सबसे पहले आप ओवल जो है बी का डार्क करेंगे. ओके, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, आप बी का ओवल जो है उसको क्या करेंगे, डार्क करेंगे. डार्क कर दिया, उसके जस्ट बाद देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है उसका रिस्पॉन्स बी है, उसके जस्ट बगल में देखिए एक बॉक्स बना हुआ है. डू यू सी दैट? वो बॉक्स दिखता है आपको? आई एम होपिंग दिख रहा है. यस. नाउ अगर आपको आंसर लगता है बी है, राइट द आंसर इन द बॉक्स एज बी. आप उस बॉक्स में आंसर बी भी लिखेंगे, सिर्फ मार्क नहीं करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्क तो करना ही है. ओके, बट उसके साथ आपको रिस्पॉन्स में बी भी लिखना है. इज दैट क्लियर? ये बात क्लियर है? ओके. Okay. So suppose if I think that the correct answer is C, I'll darken the C bubble and then I'll write C against it in the box. Right? Are we good? So that's how we do it. हम इसको ऐसा ही करते हैं. Right? Is that okay? Then a typical OMR sheet will contain 60 question. आपके OMR sheet में कुछ 60 question को आंसर करने के लिए options होंगे. It's entirely possible that your question paper doesn't contain 60 question. अब जैसे मैथ्स का है तो उसमें 60 question है ही नहीं, बट OMR sheet में 60 question को आंसर करने का वो होगा. तो आपको कुछ questions obviously छोड़ने पड़ेंगे. राइट? आपको कुछ questions छोड़ने पड़ेंगे, ऐसे भी कुछ questions छोड़ने पड़ेंगे. तो आपको क्या करना है, जिस question को आपको छोड़ना है ना, उसमें आपको राइट हैंड साइड में बबल मार्क करना है. ओके, लुक एट दिस. जैसे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3. ओके, तो जैसे मुझे अगर 3 में मार्क नहीं करना, ओके, लेट्स से दैट मुझे 3 में मार्क नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा ना कि 3 के जस्ट जो राइट हैंड साइड में एक देखिए कॉलम हैश का बना हुआ है. राइट? ओके, हैश हैश, you are familiar with computer programming, so hash means number, right? So it's number 1, number 2, number 3. Okay, तो अगर आपने हैश के नीचे वाला सर्कल डार्क किया, इट मींस दैट यू हैव लेफ्ट द क्वेश्चन असाइड. इसका मतलब आपने क्वेश्चन को छोड़ दिया है. ओके, तो दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग. अब देखिए ये भी नहीं था पहले, है ना. सो द पॉइंट इज दैट आपने अगर ये मार्क कर दिया ना, जैसे आपने वो सोचा कि ये क्वेश्चन मुझे छोड़ना है, क्वेश्चन नंबर 3 आई हैव टू लीव इट असाइड, तो आपने 3 को क्या कर देना है, उसको डार्कन कर देना. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, इससे क्या होगा? इससे फायदा ये होगा ना कि सपोज दैट आप लास्ट में रिवाइज करने आ रहे हैं एंड आपने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मार्क किए जो आपने कर लिए हैं, और फिर वो काउंट किए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपने छोड़ दिए हैं. इट शुड बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर इन योर क्वेश्चन पेपर. और अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने गलती से छोड़ दिए. राइट? And you should go back and attempt those questions. है ना? So this will help you this way. ये आपको ऐसे help करने वाला है. Right? Okay. And then there's that thing here that, of course, you have to take the pledge that what you say is all correct. जो आप कह रहे हैं सब कुछ correct है. Okay, then they say that, of course, there are 60 questions in the OMR sheet, and you should only take mark the relevant ones जो आपको लगता है necessary है, जो आपको लगता है आप करने वाले हैं. जिनको आपको छोड़ना है वो आप छोड़ सकते हैं by marking those answers in the hash column, by darkening those bubbles in the hash column. Right? Are we good? Okay. So अगर आपके पास 45 questions ही करना है and you happen to attempt 46th question, तो well, you will not be evaluated on the 46th question. फिर आपको 46th question पे evaluate नहीं किया जाएगा. That's the point.
Okay, yeah. Okay, next. Then they say that for giving a response, four questions so are there. आपको एक response देने के लिए चार questions होंगे वहाँ पे, of course. And if you are confident about the correctness of one, then they're saying that darken that. Of course, that's something that we have already discussed. अच्छा, we have also discussed कि अगर आप जब डार्क कर देते हैं तो उसके बाद आप A या B या C या D जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो बॉक्स में लिखेंगे, राइट? Now, now, what's the purpose of giving this box? नहीं, आप सोच रहे होंगे कि बॉक्स देने का पर्पस क्या है? तो well, the purpose is कि सोचे ना, ऐसा मेरे साथ हुआ है, like it's happened to me as well. It happens to my students. In fact, the more I talk, the more I get to know that, in fact, great students, brilliant people, they kind of make a mistake or two in a problem or two, and just by these very silly mistakes, there are lapses. होता है ना, nerves हो जाते हैं कभी कभी एग्जाम्स में. So there are these lapses that we sort of are quite susceptible to. So उनका आंसर आया A, है ना, और उनके दिमाग में चल रहा है A, बट उन्होंने ओमार शीट में क्या लिख दिया B. Oh, now that's a problem. अब आपने आंसर आपके दिमाग में चल रहा था A और आपने डार्क कर दिया B. कोई बात नहीं, आप बॉक्स में जाइए और A लिख दीजिए करेक्ट आंसर. ओके, आप बॉक्स में जाइए और क्या लिख दीजिए? A लिख दीजिए करेक्ट आंसर. ओके, you'll still get the marks. आपको अभी भी पूरा मार्क्स मिल जाएगा. Getting my point? That's the important thing about this box. कि अगर मैंने कोई गलती कर दी ना कि वो gosh, like I was thinking of the answer to this should be A और मैंने डार्क कर दिया B. Now I don't know how to make changes. Why? Because I'm using a ball pen. मेरे पास तो एक बॉल पेन है. अब मैं बॉल उसको डिलीट कैसे करूँ? तो रब होगा नहीं. So, well, there is a way by which I can still salvage this problem, and there is a way by which you can still salvage this problem, and that is that you can mark that answer box by A. Up answer box में लिख दीजिए A, excuse me, and still you will get the marks. आपको marks फिर भी मिल जाएगा पूरा का पूरा, right? It doesn't matter. Okay, so first of all आपको क्या करना है? Darken करना है. फिर क्या करना है आपको? लिखना भी है. Okay, that's the thing. Okay, and agar there is a contradiction between what you have darkened and what you have written, आपने जो जो लिखा है और जो जो डार्क किया है और जो लिखा है, इसके बीच में दो अलग अलग चीजें, मतलब आपने डार्क किया है B और लिखा है A, तो फाइनल रिस्पॉन्स विल बी व्हाट यू हैव रिटन इनसाइड दैट बॉक्स. जो आपने बॉक्स के अंदर लिखा है उसको आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा. जो आपने डार्क किया है उसको आपका करेक्ट आंसर नहीं माना जाएगा इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द चॉइसेस दैट यू हैव डार्कन एंड बिटवीन द आंसर दैट यू हैव रिटन इज ट्रू, राइट? तो अगर आपके इन दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, देन विल टेक दैट, दे विल टेक दैट what you have written is true. Now, this is a very important distinction. Okay. Now come to 9, 10, and 11. Now, this is very important. So they say that if the box is empty and the response is marked in the circle, it will be considered that the question has not been attempted by the candidate. तो अगर आपने उसको डार्क कर दिया और उस बॉक्स में नहीं लिखा, तो they will say that it means that the question has not been attempted. And I'm pretty sure that you will not like yourself to be in such a pitiable state कि इतना करने के बाद, आंसर निकालने के बाद आपने सिर्फ डार्क करके छोड़ दिया और नहीं लिखा वहां पे, और फिर आप सोच रहे हैं अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया. दे विल रीड इट एज क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया. यू वुडंट लाइक दैट टू हैपन. तो आपको लिखना पड़ेगा. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. डार्क तो करना ही है, लिखना भी है. Now they say that if the response is given in a box and the circle is left blank, it will be considered that the question has been attempted by the candidate. तो अगर आपने बॉक्स में लिख दिया है, सर्कल में नहीं मार्क किया है, तो well it means that it has been attempted. इसका मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा चुका है, राइट? सो अगर आपने सर्कल कर दिया, बॉक्स नहीं किया, नॉट अटेम्प्टेड. सर्कल नहीं किया, बॉक्स में कर दिया, अटेम्प्टेड. If all the three, if all the three, that is 4 circles and box are left blank, अगर आपने चार सर्कल्स भी ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है, बॉक्स भी ब्लैंक छोड़ दिया, और वो जो था कि नहीं अटेम्प्टेड वो भी ब्लैंक छोड़ दिया, तो ये दे विल कंसीडर द क्वेश्चन हैज नॉट बीन अटेम्प्टेड. ओके, okay, now I'll come to, so that was that, right? So just let me brief it up. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ब्लैकन करना है, फिर रिस्पॉन्स भी लिखना है. इज दैट ओके? एंड फिर जाके आप
आप आगे आगे की चीज करने वाले हैं इस दर की, या एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना है तो हैश के नीचे वाले ऑप्शन को आपको डार्क इन कर देना है। इज दैट क्लियर? अगर आपने देखो, अगर आपने जो डार्क किया और वही लिखा तब तो ठीक है, लेकिन आपने जो डार्क किया और वो नहीं लिखा, कुछ और लिखा है बॉक्स में, तो बॉक्स के रिस्पॉन्स को फाइनल माना जाएगा। इज दैट ओके? अगर आपने सिर्फ डार्क किया और वो नहीं किया, बॉक्स में नहीं लिखा, वेल यू हैव लॉस्ट योर क्वेश्चन, इट विल बी मार्क्ड एज अनअटेम्प्टेड। अगर आपने सिर्फ बॉक्स में लिख दिया, well, it will still be marked as attempted, right? Okay, so that's the whole uh, modality of how you answer these questions when they present you with multiple choice questions, right? Now we'll come to the strategy part. I'm not talking strategy part, man. I'm quite eager that I should tell you a thing or two that eventually will help you in sort of clearing the doubt and apprehension that you might harbor at this stage. And I have something to say here. मुझे कुछ कुछ चीजें आपको बतानी है. So I'm hoping that you, as I have said, that you have a pen and a paper, and I will be very repetitive. मैं repetitive होऊंगा जब मैं कुछ strategies discuss कर रहा हूँ. I am being purposefully repetitive. मैं जानबूझ के अपने आप को repeat करने वाला हूँ. And that's principally because there is a psychological concept called priming. Right? एक psychological concept होता है priming कि एक ही बात बार बार बोली जाए. Uh, then somewhere, even at a subconscious level, it finds itself in your memory. ये आपके memory में store हो जाएगी, right? It's much like advertisements. नहीं, आप देखते हैं advertisements, टीवी में देखा, रोड पे देखा, फिर यहाँ देखा, वहाँ देखा, and that product, like, it sort of settles inside your mind, right? So that sort of thing. So I'm going to repeat myself. मैं चीजों को repeat करूँगा, just for your benefit, and I'm hoping that you have a pen and paper, and you're going to write down things which you might find interesting and which you think that you might forget, right? If you have noticed, then I've repeated myself. Okay. Now we come to MCQ. How to attempt MCQ, right? So MCQ stands for multiple choice questions, and well, some people might argue that no, it's most confusing question. Like, what's the difference between MCQ and subjective examination? Subjective examination or MCQ में difference क्या है? I'll tell you the basic difference, okay? Uh, Assuming that आप थोड़ी मैथ्स जानते हैं, of course आप जानते हैं, बहुत सारी मैथ्स जानते हैं, yes. तो आपसे बोला जाता है कि okay fine, look, अगर आपके पास एक subjective problem होती है कि that to prove that like 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus all the way up to n is n into n plus 1 by 2 using principle of mathematical induction. Let's pretend at this moment कि आपको नहीं आती है प्रॉब्लम सॉल्व करनी, राइट? लेट्स प्रिटेंड इसके 5 मार्क्स है. तो आप शुरू पता क्या करते हैं? आप शुरू लिखते हैं सोल्यूशन, आप लिखते हैं टू प्रूव, और फिर पूरा स्टेटमेंट लिखते हैं. इज दैट ओके? फिर आप लिखते हैं कि ओके इंडक्शन ये होता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं. फिर आप कुछ करते हैं, ओके, जो सही नहीं होता है. फिर आप कंक्लूजन, लेकिन तब भी सही ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, कि अच्छा हेंस प्रूव्ड. ओके, से 5 मार्क्स की प्रॉब्लम है. तो व्हाट टीचर डज इज, 1 मार्क आपको दे दिया इंट्रोडक्शन लिखने पे कि भाई प्रूव दैट, और ये लिखा है. दूसरा मार्क आपको इस पे दे दिया कि कुछ अटेम्प्ट किया हुआ है, और मे बी हाफ अ मार्क और समथिंग लाइक दैट दे दिया आपको लास्ट में कि कंक्लूजन तो सही है. तो 5 मार्क की प्रॉब्लम है, एंड यू हैव अर्न योरसेल्फ 2.5 मार्क्स डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू डिडंट नो एट ऑल हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम. आपको कुछ नहीं पता था प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है, और आपने 2.5 मार्क्स तो गार्नर कर ही लिए. नहीं, imagine yourself sitting in an examination with MCQ choice question. यहां पे आपके पास वो चॉइस नहीं होगी कि हाँ हाँ आपके पास हाफ अ मार्क आ जाए या आपके पास 2.5 मार्क्स आ जाए. नहीं होगी. यू गेट 0 और यू गेट 4. या तो आपको 0 मिलने वाला है या आपको 4 मिलने वाला है. सो वी मस्ट बी एब्सोल्युटली कन्विंस्ड अबाउट द आंसर दैट वी मेक. तो हम जो आंसर करने वाले हैं उसके बारे में तो हमें एब्सोल्युटली कन्विंस होना पड़ेगा कि भाई यही पूछा जा रहा है. Okay, so now let's discuss the various tips and tricks and strategies that we are going to adopt so that we can maximize our score in an MCQ examination. नहीं, MCQ examination में कुछ कुछ गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स, कुछ कुछ चीजें होती हैं जो आपको अवॉइड करनी होती हैं, कुछ डूज होते हैं जो आपको करने होते हैं, कुछ डोंट्स होते हैं जो आपको नहीं करने होते हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं जो आप इनकलकेट करेंगे अपने अंदर. आप देखेंगे कि that if you apply all of these successfully, you will find that, well, more or less, that you will be able to score well, I think that above your potential. Okay, so now the first thing about our
strategy is, तो पहली जो strategy है वो ये है कि that read the entire question paper. I can't possibly overstate the importance of reading the entire question paper. मैं ये नहीं बता सकता कि पढ़ना पूरे क्वेश्चन को सही से कितनी इंपॉर्टेंट बात है. I'll tell you why. है ना? आपने क्वेश्चन देखा, ओके, अब देखिए क्या क्या गलतियां करते हैं. आई से दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस फॉर द स्टूडेंट्स दैट आई हैव टॉट. वो आते हैं बताते हैं सर ये देखा ना, और मुझे लगा कि सर ये तो आपने वो, ये तो मुझे, सर ये क्वेश्चन है ना, इसका मैंने सी मार्क कर दिया. क्यों मार्क कर दिया? बिकॉज सर ये मैंने ऐसे पढ़ा ना, तो मुझे लगा कि ये वही क्वेश्चन है जो आपने क्लास में कराया था, तो मैंने देखा भी नहीं, हमने मार्क कर दिया बिकॉज शुरू का कुछ सिमिलर था, और फिर घर पे आके देखा तो देखा कि ये तो क्वेश्चन ही नहीं है. डोंट डू दिस. Okay, don't do this that you are in a rush, you are hurriedly reading the question paper, or you are not reading the question paper at all. This is an absolute disaster. तो आप पहले जो है क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ेंगे, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे. ओके ओके, द सेकंड स्टेप, then it says that answer it in your mind. So what do you mean by answer it in your mind? पहले सुनिए, like it's not as if that we are saying that answer the question in your mind and you are done. No, that's not what we're saying. What is essentially seen कि जब student MCQ करने बैठता है ना, and particularly you people, because you have a history of attempting board examinations which is subjective, तो जैसे ही क्वेश्चन मिलता है ना, आप स्क्रिबल करना शुरू कर देते हैं. नहीं लिया और अरे ये हो जाएगा. नो, वेट वेट वेट, ऐसा नहीं. क्वेश्चन देगा, अब अपने दिमाग में सोचिए कि ट्राई टू फॉर्म एन आइडिया कि व्हाट डज द क्वेश्चन एंटेल, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. सो इफ इट्स अ थियोरेटिकल प्रॉब्लम, अगर एक थियोरेटिकल प्रॉब्लम है, तब तो आपके पास सोचने ही पे ही आंसर आ जाएगा. यू डोंट इवन नीड टू स्क्रिबल, आपको स्क्रिबल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. इज दैट ओके? हाउएवर हाउएवर अगर अगर हाउएवर अगर 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 लेट्स से कॉम्पिटिशनल प्रॉब्लम है, तो इफ यू थिंक ओवर द प्रॉब्लम, तो इट विल गिव यू एन इनसाइट कि भाई करना क्या है. फॉर्मूला यूज होना है, ये वाला आइडिया यूज होना है, या ये वाली प्रॉब्लम है, या इसको मैं रिलेट कर पा रहा हूं वहां से, क्या करना है. This is that you will be able to do. So you will be able to outline, or you will be able to sketch that what the solution will look like. Is that okay? That's the second thing that you have to do. Think over in your mind. Or in fact, I'll argue that मैं बहुत इस बात का, I'm a votary of this fact that if you spend some time thinking over the problem, then you save a lot of time for computation. अगर आप सोचने में थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आप कंपटीशन में बहुत सारा टाइम सेव करते हैं. ओके, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आप थोड़ा सोचते हैं, कुछ आइडिया क्लिक कर जाता है, और जो एक एडहॉक स्ट्रैटेजी थी कि स्क्रिबल करके लंबे वाले मेथड से आंसर निकालना, वेल दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट आपने थोड़ा सोचा, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट किया, वेल आपके पास एक आंसर आ गया. राइट, इट्स इंटायरली पॉसिबल. थर्ड, एलिमिनेट रॉन्ग आंसर्स. वेल आई एम गोइंग टू टेक दिस अप इन ग्रेट डिटेल. मैं इसको डिटेल में लिखने वाला हूं. इनफैक्ट एज आई सेड दैट आई एम गोइंग टू रिपीट माई सेल्फ, आई एम गोइंग टू रिपीट माई सेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन कि हम गलत आंसर को एलिमिनेट कैसे करेंगे. तो थर्ड स्टेप ये है कि जब आंसर करने आ रहे हैं तो आप एलिमिनेट कीजिए, है ना, कि आप ये बोलिए अच्छा ये तो नहीं हो सकता, कि फिर ये नहीं हो सकता, फिर ये नहीं हो सकता, जैसे ये नहीं हो सकता, इधर के, है ना. तो फिर क्या होगा? अच्छा, अब एलिमिनेट करने की वेज क्या है? एलिमिनेट करने के कुछ क्लूज होते हैं क्वेश्चन में. सो अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा ना, तो क्वेश्चन है समटाइम्स नॉट ऑलवेज, ऑफ कोर्स, लाइक कोई बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, लाइक क्वेश्चन सेटर ने बहुत ही अच्छा सा लैंड माइन आपके लिए सेट किया हुआ है, तो समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल टू जस्ट गो थ्रू बाय एलिमिनेटिंग आंसर्स, आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा. बट कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि हम क्वेश्चन देखते हैं और एलिमिनेट कर देते हैं ऑप्शंस को. मैं करने वाला हूँ आज ही किस में करने वाला हूँ. इनफैक्ट आपको पता है कहां से करने वाला हूँ? I will go live with you and I'll take a problem from CBSE sample paper. मैं आपके CBSE के sample paper से क्वेश्चन लेने वाला हूँ, और मैं आपके सामने एलिमिनेट करके बताऊंगा कि ये आंसर होगा. जस्ट एलिमिनेशन. आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट. राइट. What do you have to look for them in? आपको क्या देखना पड़ता है? आपको देखना पड़ता है clues. Okay, this helps. This work. अच्छा, ये इसका यूनिट, अच्छा ये तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका तो यूनिट वोल्ट होगा, तो ये आंसर एम्पियर में क्यों दे रखा है? एम्पियर है तो गलत हो गया. दैट्स, ओह लेट्स एक्सक्लूड दिस. ओके, अच्छा ये आंसर तो मेरा पॉजिटिव आना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है, वेल एलिमिनेट दिस, खत्म करो इसको, है ना. तो यू हैव टू एलिमिनेट रॉन्ग आंसर्स. तो आप देखेंगे कि दैट बहुत बार ऐसा होता है कि आप गलत आंसर को एलिमिनेट करके यू जस्ट
better your chances of getting the question right. Okay, fourth is that read every answers option. This is very important. This is very important. Many students are in this section कि भाई क्या किया उन्होंने, एक बार लिया क्वेश्चन पेपर पढ़ा, फर्स्ट ऑप्शन दिखा करेक्ट है, टिक कर दिया, भाग गए. वेल वाई, बिकॉज उनको लगता है हम वो तो टाइम सेव कर रहे हैं, बचा तीन ऑप्शन कौन पढ़ता है. अरे रुक जाओ यार, लाइक व्हाई डू यू नीड टू टिक द ऑप्शन व्हिच यू आर वेरी टेम्प्टेड टू अस्यूम दैट दैट्स करेक्ट. है ना, ऐसा बहुत टेम्प्ट होता है आपको करने में कि अरे भाई ये इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर यही तो होगा. नहीं, रुक जाइए. समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है ना कि all options are more or less correct and you have to choose the best option. ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, पर्टिकुलरली इन केमिस्ट्री, पर्टिकुलरली इन थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स. अब देखो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उसके में अगर आपका आंसर पाई आ गया तो ठीक है, पाई आ गया भाई, पाई ऑप्शन है, टिक कर दो, उसमें क्या गलत होगा, दैट्स फाइन. बट अगर आपके पास कोई थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है एंड यू आर ट्राइंग टू वेड थ्रू द थ्योरेटिकल प्रॉब्लम and without giving all the three options a thought, all that you have done is that you have ticked the first option because you thought that that was obviously correct. अब सोचिए ना, कोई प्रोडक्ट पूछ दिया, ओके ये रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट क्या आएगा, और उसमें क्या हो गया कि ए ऑप्शन है और आपने ए टिक कर दिया और नीचे नहीं देखा. आपको पता है कि ए भी बनता है इसमें, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उस रिएक्शन में कुछ और प्रोडक्ट भी बनता हो और वो ज्यादा बनता हो, ज्यादा क्वांटिटी में बनता हो, और वो डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, राइट. तो फिर वहां पे तो करेक्ट ऑप्शन वो होगा ना, डी होगा, जो प्रोडक्ट 99% बन रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो 1% बन रहा है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं मानेंगे वहां पे. तो प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, डोंट बी इन अ हेस्ट. इनफैक्ट आई विल कम टू दिस पॉइंट अगेन, मैं इस पॉइंट पे वापस आऊंगा कि अगर आप फर्स्ट ऑप्शन टिक करके ही भाग जाते हैं, व्हाट आर द पेरिल्स, यू विल सी दिस इन अनदर स्लाइड, राइट. तो डोंट डू दिस. अगर क्वेश्चन थ्योरेटिकल है मत कीजिए, क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल है कर दीजिए. कि अगर आपका आंसर 1 आ गया तो 1 टिक करके चले गए, फिर 2 3 4 थोड़ी हम देखने जाएंगे, दैट्स फाइन. आंसर द क्वेश्चंस यू नो फर्स्ट. जो क्वेश्चंस आपको पता है उन क्वेश्चंस को आप पहले कीजिए. आई विल कम टू दिस पॉइंट अगेन, बट लेट मी टेल यू दिस. If you're going to adopt a strategy that goes like that, you're going to solve problems chronologically. अगर आपने कोई ऐसी strategy adopt की है which involves that you're going to go through all the questions chronologically, then you're inviting for yourself most probably a disaster. आप अपने लिए एक disaster invite कर रहे हैं. Trust me on this. And I say this from great confidence because I am myself a question paper setter. मुझे भी पता है ना कि क्वेश्चन पेपर सेट कैसे किया जाता है. तो अगर आपने ना क्रोनोलॉजिकली पहले 1 किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया, फिर 4 किया, फिर 5 किया, फिर जाके ऐसे ही क्वेश्चन आप कर रहे हैं, इट्स एंटायरली पॉसिबल दैट डिस्पाइट द बेस्ट प्रिपरेशन यू विल हैव अ वेरी बैड डे. क्यों? आई विल आस्क यू टू कंसीडर दीस टू सिनेरियोज. मैं आपसे दो सिनेरियोज कंपेयर करने बोलता हूं. वन सिनेरियो, मैंने आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने दिए. द फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, ओके, एंड द लास्ट 5 क्वेश्चंस आर वेरी इजी. पहले 5 क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट है, लास्ट 5 क्वेश्चन बहुत ही आसान है. अगर आप क्रोनोलॉजिकली अटेम्प्ट करते हैं, मतलब पहले आप 1 करते हैं, फिर 2 करते हैं, फिर 3 करते हैं, फिर 4 करते हैं, फिर 5 करते हैं, assume that this is the case, तो now think of this. आप 1 करने जाएंगे, आपसे देखा आपको हवा भी नहीं लगी प्रॉब्लम की, तो इसे हो यार बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम थी, ओके चलो नहीं हो रही, आपने 2-3 मिनट टाइम इन्वेस्ट किया, आप कहते हैं ठीक है खत्म करो, नहीं हो रही, ओके. मैंने आपको 30 मिनट्स दिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ओके 10 क्वेश्चन. आपने 3 मिनट फर्स्ट क्वेश्चन में इन्वेस्ट किया या 4 मिनट इन्वेस्ट किया, आपको कुछ पता नहीं चला, बोले ओके लीव इट. यू कम टू क्वेश्चन नंबर 2, फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, यू इन्वेस्ट 5 मिनट्स देयर एंड देयर इज नो रिजल्ट एब्सोल्युटली. देन यू स्टार्ट गोइंग स्केप्टिकल कि यार क्या हो रहा है, लाइक आज का दिन खराब है क्या मेरा. देन यू कम टू क्वेश्चन नंबर 3, वेल नेक्स्ट 5 मिनट्स कुछ भी ये भी नहीं हो रहा. देन यू रियलाइज कि 15 मिनट्स हो गए, एक भी प्रॉब्लम आपने सॉल्व नहीं की है. देन व्हाट यू रियलाइज इज कि यार मैं प्रिपरेशन ढंग से करके आया था या नहीं आया था. फिर आप जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, वो भी नहीं होता. 25 क्वेश्चंस, 25 मिनट्स, नो आंसर्स, और मे बी 15 मिनट्स, नो आंसर्स, 20 मिनट्स, नो आंसर्स. पता है फिर क्या होगा? Then you won't think that these questions are difficult or this paper is difficult. What you will think is that you are incapable of solving this paper, right? फिर जब आप क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे ना, फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे ना, क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएंगे ना, you will make silly errors, you will make silly mistakes, you will commit very rookie mistakes जो आप क्लास 5 or 6 में किया करते थे.
एंड यू विल इवन गेट दोज क्वेश्चंस रॉन्ग. अब वो भी क्वेश्चन गलत करके आएंगे, इसलिए नहीं कि आपको नहीं आते थे, इसलिए क्योंकि आप उस माइंड फ्रेम में थे ही नहीं कि आप सही क्वेश्चन कर पाए. राइट. तो डोंट डू दिस कि आप वन के बाद टू के बाद थ्री करें. नहीं, पहले आप क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करें. जो आसान क्वेश्चन है उसको पहले आइडेंटिफाई करें, उन आसान क्वेश्चन को करें. ओके. ऑलवेज कीप इन माइंड दैट एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक दीज, दे आर नॉट जस्ट अ टेस्ट ऑफ स्किल. ये आपके स्किल के टेस्ट नहीं है. अगर आपको सिर्फ स्किल का टेस्ट चाहिए तो दे आर ओलंपियाड्स. राइट. सो आई हैड ओलंपियाड डिवीजन एट विद्या मंदिर क्लासेस. ओलंपियाड डिवीजन का हेड करता हूँ, एंड आई नो दैट दैट एग्जामिनेशन इज अबाउट स्किल. बहुत टाइम होता है, 1 घंटा आपके पास एक क्वेश्चन करने के लिए. इफ यू वांट टू सॉल्व इट, यू कैन सॉल्व इट. ओके. बट यहां पे ये बात नहीं है. इट्स ऑल्सो टेस्ट ऑफ अ टेम्परमेंट, कि आप किस टेम्परमेंट के लेके जा रहे हैं एग्जामिनेशन में. राइट. एंड अगर आपने, अब देखिए ना, इसका उल्टा सोचिए. अगर आपने शुरू में कुछ आसान आसान क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, नहीं, 5 जो क्वेश्चन थे जो बहुत आसान आपको लग रहे थे वही आपने सॉल्व कर लिए, तो बिकॉज बहुत आसान थे तो आप 5 मिनट में कर लोगे भाई? नहीं कर लोगे. अब आप सोचो, अगर उन 5 क्वेश्चंस को 5 मिनट में कर लोगे ना, यू हैव दिस इनॉर्मस कॉन्फिडेंस गोइंग इनटू दीस नेक्स्ट 5 प्रॉब्लम्स. आपके पास इतना सारा कॉन्फिडेंस होगा बचे हुए 5 प्रॉब्लम्स में जाने के लिए, that you will say, okay, these 5 problems, remaining 5 problems, well, I'll also do these in 5 minutes. But ये अलग सी बात है कि वो बहुत मुश्किल होंगे. But it's entirely possible that the confidence that you will carry by virtue of solving those 5 easy problems will eventually allow you to solve those problems which were perceivedly beyond your capabilities that you had originally thought. मतलब ऐसा entirely possible है कि that वो सारी problems जो आपकी capabilities से आगे की थी, वो भी आप सॉल्व कर लोगे, just because of the confidence that you have acquired in solving those 5 problems that were relatively easy. Okay. Always answer easy questions first. Okay, so I'm going to the next slide. Make an educated guess. So the first thing that we encounter when we encounter multiple choice question is that, well, is there a way out कि कुछ आसान सा कर दिया जाए, आंसर आ जाए. नहीं. अच्छा, ऐसा कोई तरीका है कि tell us that how can we make a guess कैसे कर सकते हैं? Well, there are various clues that we look for. बहुत सारे clues होते हैं जिसको हम देखते हैं. So for example, in physics, अगर physics में आपके पास you look for units, आप units देख सकते हैं. So as I said, अगर potential difference पूछा जा रहा है और आंसर में एम्पियर है, well, disregard that. कुछ वेलोसिटी पूछी है और किसी ऑप्शन में मीटर है या किसी ऑप्शन में मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है, तो वेल, यू कैन डिसरिगार्ड दैट ऑप्शन. आप उस ऑप्शन को डिसरिगार्ड कर सकते हैं. बट ऑलवेज कीप इन माइंड दैट एजुकेटेड गेस करना विल रिक्वायर समथिंग फ्रॉम यू फोक्स. आपसे, मतलब कुछ एजुकेटेड गेस में आप से एक्सपेक्ट किया जाएगा. मतलब आपको थोड़ी चीजें पता होंगी, उन थोड़ी चीजों को यूज करके आप फिर एलिमिनेट कर पाएंगे. राइट. आई एब्सोल्युटली डोंट लाइक द आइडिया ऑफ प्लेइंग टिक टैक टो इन एग्जामिनेशन. लाइक टिक टैक टो खेलना तो बहुत ही बकवास सी बात है कि आप गए, आपने एबीसीडी देखा और आपको आंसर नहीं पता है, तो आप ये भी नहीं कर रहे कि एजुकेटेड गेस मार रहे हैं. आप क्या कर रहे हैं? टिक टैक टो खेल रहे हैं. टिक टैक टो मतलब ए. ओके, आपने कॉइन 2 बार टॉस किया, 2 बार हेड आया तो ए कर दिया, एक बार हेड और एक बार टेल आया तो बी कर दिया, पहली बार टेल और दूसरी बार हेड आया तो सी कर दिया, और दोनों बार टेल आया तो डी कर दिया. नो, लाइक दैट्स एन एब्सोल्युटली बिज़ार वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम. और लेट्स से मैं कहता हूं कि अगर ऐसा ही करना है ना, तो फिर टिक बी और सी, तो फिर बी और सी टिक कर देना. अगर ऐसे ही टिक टैक टो करना है तो व्हाई ऐसे ही आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों बोल दिया. बिल मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज़ बी एंड सी combined have a probability of about 63% of being correct. बी एस सी को अगर आप मिला लेते हैं तो कुछ 63% चांसेस होते हैं कि वो करेक्ट होंगे. आइडियली 50% होना चाहिए था ना, 2 ऑप्शंस हैं तो. बट या इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इट हैज बीन फाउंड दैट द आंसर इज बायस्ड टुवर्ड्स बी एंड सी. बी और सी की तरफ आंसर्स जो होते हैं वो बायस्ड होते हैं. बट नेवर माइंड, ये मत करना. मतलब ये लास्ट में करना अगर कुछ भी नहीं पता चलता है तो, एजुकेटेड गेस नहीं कर पाते तो. हाउ डू यू मेक एन एजुकेटेड गेस? एजुकेटेड गेस आप कैसे बनाते हैं? सो वेल, यू pay attention to the words. Uh, and how do you pay attention to these words? So first is all of the above. So I'll come back to educated guess. In fact, I'm going to take very specific examples. Next in line is that you have to pay attention to these words, like all of the above. अगर आपके पास क्वेश्चन में एक ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव ना, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके ऑप्शन का, आपके क्वेश्चन का वही करेक्ट आंसर होने वाला ऑल ऑफ द अबव. इट्स अ रूल ऑफ थंब, है ना. अच्छा, अब अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और फर्स्ट सही आ गया और आप टिक करके भाग गए, आपने नहीं देखा कि ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव है,
आपको समझ में आई बात कि क्यों क्वेश्चन पढ़ना जरूरी होता है? नहीं, ऑल ऑफ द अबव भी तो एक ऑप्शन हो सकता है ना। ओके, ऑल ऑफ द अबव कैसे पता करते हैं? तो वेल देखिए, अगर आपके पास 4 ऑप्शन है और आपने एक सॉल्व किया सही आ रहा है, दूसरा सॉल्व किया फिर भी सही आ रहा है, तब तो ऑल ऑफ द अबव हो गए ना, बिकॉज दो ऑप्शन तो करेक्ट हो नहीं सकते आपके एग्जाम में, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इट हैज टू बी ऑल ऑफ द अबव, है ना। तो ऑल ऑफ द अबव जब आए तो देर आर there is a distinct possibility that perhaps this is going to be the right answer. Always bear that in mind. ये ध्यान में रखिएगा, right? Okay, now we come to a very tricky choice called none of the above. None of the above पे कैसे करते हैं? Well, none of the above is a slightly tricky one. इसमें आपको तीनों रिफ्यूज करना, मतलब तीनों ऑप्शन देखने पड़ जाएंगे कि भाई ए भी करेक्ट है, इनकरेक्ट है, बी भी इनकरेक्ट है, सी भी इनकरेक्ट है, फिर जाके आप डी जो है वो चेक करेंगे, क्योंकि राइट ना दिस इज आवर करेक्ट आंसर. So what usually happens is that if you're a bit impatient, then you can fundamentally mark this question incorrect. Okay. Because this problem, the problem which has none of the above as one of these choices, if it comes to you, right, so you have to verify that all the three options which are given to you are incorrect. And that can be tasking. That can be a daunting task sometimes, but you will have to do it. तो ये जो none of the above वाली चीज है ना, it's slightly tricky. ये थोड़ी सी tricky है. Okay. Are you getting my point? Okay. अगर दो करेक्ट आंसर आ गए तब तो ऑल ऑफ द अबव हो गया भाई, हम तीसरा वेरीफाई नहीं करने जाने. वी आर गुड. ओके. देन यू कैन आल्सो प्लेस योर बेट ऑन पॉजिटिव ऑप्शन. आप अपना बेट प्लेस कर सकते हैं पॉजिटिव ऑप्शन पे. जनरली अगर आप इफ यू हैव टू प्ले टिक टैक टो बिटवीन टू चॉइसेस, एक नेगेटिव है ना, दूसरा पॉजिटिव है, वेल I'll bet on positive one. मैं अपना bet positive पे लगाने वाला हूँ. In fact, as I said, that I have got problems from CBSE sample paper. I'm going to demonstrate these. ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, that using clues, make educated guess, ये मैं demonstrate करने वाला हूँ अभी using CBSE sample paper. Right? Are you with me? Okay. Okay. And so we'll come to that. हम उसमें बाद में आने वाले हैं. But let me take you to a sample paper. मैं आपको एक sample paper पे ले जा रहा हूँ. And I'm going to make an educated guess. मैं educated guess करने वाला. I'm not going to solve these problems. I'm just trying to help you out. That when you find yourself at a loss to solve problems, आपको जब लगता है कि यार अब प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रही, अब क्या करें यहाँ पे, then you will try to make an educated guess. फिर आप एक educated guess मारने की कोशिश करेंगे. और वो educated guess कैसे मारते हैं? It's by gathering clues as much as you can. आप clues gather करके educated guess मार सकते हैं, right? Well, here is Vaibhav, can you see this question? Vaibhav, hello. Hi, Vaibhav. Yes, sir. Yes, sir. Oh, I'm so sorry. I had to. I was speaking your name so many times. So, can you see this question? Yeah, on my screen? I can see that. I can see that. Yes, visible. Okay. Great, great. Thanks, Vaibhav. So, in fact, Vaibhav, I'm going to ask this a couple of times. So, please bear with me, right? Uh, look at question number 2. And मैं question number 2 पढ़ने वाला हूँ, right? Okay, just question number 2. And I'm going to make an educated guess. मैं एक educated guess करने वाला हूँ. It says that the value of k, okay, and k negative दे रखा है ना, that's important, for which the function defined is continuous. पता है क्या? I'm not going to read any further. मैं आगे कुछ पढ़ने नहीं वाला, okay? I'm not going to read any further. Let's pretend at this point that I don't know what continuity is. मुझे नहीं पता कि continuity क्या होती है. नहीं पता भाई. नहीं पता. Let's say मुझे नहीं पता continuity क्या होती है. बट मुझे पता क्या है कि मुझे k की वैल्यू निकालनी है. और मुझे पता क्या है कि k की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए. ओके. आई एम लुकिंग एट ऑल द ऑप्शंस. मैं सीधे से ऑप्शन पे आ जाऊंगा एंड आई एम गोइंग टू डिस्कार्ड एनी ऑप्शन व्हिच कंटेन्स पॉजिटिव नंबर्स. मैं उन सारे ऑप्शंस को डिस्कार्ड करने वाला हूं जिसमें भी पॉजिटिव नंबर होंगे. क्यों? बिकॉज दे हैव गिवन दैट k इज नेगेटिव. क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि k नेगेटिव है. राइट? तो लेट्स प्रिटेंड एट दिस मोमेंट कि मुझे नहीं पता कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या है. लेट्स प्रिटेंड कि फंक्शन भी क्या नहीं पता. बस मुझे पता है कि k की वैल्यू निकाल दी है. मुझे पता है कि k नेगेटिव है. मैं ऑप्शन देखता हूं. सबसे पहले आई एम गोइंग टू डिस्कार्ड ऑप्शन डी. भाई क्यों डी? बिकॉज डी कंटेन्स अ पॉजिटिव नंबर. राइट? Well discarded. Then I'm going to discard A and C.
क्यों? बिकॉज ए सी में नेगेटिव नंबर्स तो हैं, आई एग्री, बट उसके साथ साथ पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, बट वी आर लुकिंग फॉर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ के. डू यू एग्री? यस. Then the only option that is left to us is, तो फिर जो हमारे पास बच जाती है बात, well that's only B, don't you agree? Well then that should be the answer. फिर वही आंसर हो जाना चाहिए. Do you see कि अगर मुझे नहीं भी पता है कि कॉन्टिन्यूटी क्या है, मुझे नहीं भी पता है कि ये क्वेश्चन क्या है, मैंने क्वेश्चन में क्लूज आइडेंटिफाई किए कि भाई के नेगेटिव था तो आंसर भी नेगेटिव आना चाहिए, और बचे हुए तीन ऑप्शंस में पॉजिटिव चॉइसेस है, तो देन दैट कांट बी द आंसर. एंड हियर यू आर. डू यू एग्री? इस बात से आप एग्री करते हैं नहीं करते? यस. So that's one example. देखिए ये एक एग्जाम्पल है. In this problem we have been extremely lucky. इस प्रॉब्लम में हम लकी थे ना कि एक बार में ही हमने सारे तीन ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिए. It's entirely possible that you won't be lucky like this, बट आप ऐसा करके ना दो ऑप्शन से एलिमिनेट कर पाएंगे. ओके, जनरली ऐसा होता है. तो भाई अगर दो ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिया ना, तो दो ऑप्शन में आप कुछ पिक कर लो एक, है ना, दैट्स ग्रेट, वो ठीक है फिर, है ना. मतलब दो ऑप्शन में कुछ पिक कर लिया, दैट्स ग्रेट, लाइक दैट्स काइंड ऑफ नाइस. फिर वी हैव यू हैव अ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्रॉब्लम राइट. फिर आपके पास जो सही करने की प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा हो जाएगी कंपेयर टू द अदर थिंग. ओके, आर वी गुड? यस. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक अनदर वन. मैं दूसरा और आपको लेने वाला हूँ. सो समथिंग लाइक दैट. या no, look, like uh, at this moment let's pretend that I don't know physics. So we don't know physics. इस moment में हम pretend करते हैं कि भाई मुझे physics नहीं आती. Here's a question which says that 2-point charges plus 8q and minus 2q are located at 0 and L respectively. The point on x-axis where net electric field is 0 due to these. अब देखिए इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा. मुझे लेट्स से कि मुझे नहीं भी पता ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है. लेट्स प्रिटेंड नहीं पता है, ठीक है. लेट्स प्रिटेंड कि मुझे नहीं पता ये सब की इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे बिकॉज वेक्टर्स हैं ब्ला. लेट्स प्रिटेंड नहीं पता भाई, ठीक है, छोड़ो. आई एम गोइंग टू गेस. मैं इस क्वेश्चन को गेस करने वाला हूं. राइट, हाउ डू आई गेस दैट? फर्स्ट आई एम गोइंग टू एलिमिनेट बी. मैं सबसे पहले फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट करता हूं. स्ट्राइक दैट ऑफ. क्यों? बिकॉज जो -2q चार्ज है ना वो खुद एल पे है, तो वहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही नहीं होगा. फोर गया. डू यू एग्री? यस. देन फर्स्ट 8l. 8l इज टू फार अवे फ्रॉम जीरो. 8l जो बहुत दूर है एल से, जीरो से. दैट काउंट बी द ऑप्शन. तो देखिए ऐसे हमने डिस्टेंस से हमने एलिमिनेट कर दिया. तो व्हाट यू आर लेफ्ट विद, क्या बचा फिर आपके पास? जस्ट ऑप्शन 2 एंड 3. अब ना, अब आपको 2 और 3 लेट्स से कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला नहीं याद है, कोई बात नहीं भाई. 2 और 3 में से कोई एक ले लीजिए और पिक कर लीजिए, कोई गेस कर लीजिए, एंड यू विल हैव अ हायर प्रोबेबिलिटी. इनफैक्ट 50% चांसेस दैट योर आंसर विल बी राइट. अगर आप ठीक से करेंगे तो इट विल बी 2l. अगर आप इसका आंसर निकालते हैं तो आंसर इसका 2l आता है. राइट. सो that's how you make an educated guess. Chalo, right. So here are these 5 strategies to ace your examinations. First is plan your time. Plan your time wale part pe main aa jata hu. This is very important as far as your examination is concerned. So I'll come back to the original point in which I was saying that please, whenever you're facing an examination, don't attempt problems chronologically. Chronologically हम नहीं attempt करेंगे. 1 के बाद 2 के बाद 3 नहीं. The first 3 minutes should be devoted to what the military calls reconnaissance. आप जानते हैं recon किसको कहते हैं? Suppose that you have to invade a different area. अगर आपको दूसरे एरिया में invade करना हो, maybe if don't have to invade, maybe you have to carry out some operation. आपको कुछ operation करना है दूसरे एरिया में. The first thing that you do is, क्या आप बिना से प्रिपरेशन के चले जाते हैं और ऑपरेशन शुरू कर देते हैं? ऐसा थोड़ी करते हैं. First thing that you do is you do a strategic examination of the area, examining its strengths and weaknesses, its dangers and challenges and possibilities. यही करते हैं ना, right? तो एग्जाम भी ऐसा ही है ना. आप पहले क्या करेंगे? रिकॉनेसेंस करेंगे, स्ट्रैटेजिकली एग्जामिन करेंगे. पहले 3 मिनट क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ोगे, एंड मार्क माय वर्ड्स, लिख लो अगर लिखना चाहते हो तो. देन क्लासिफाई देम एज EMD. फिर आप उन क्वेश्चंस को क्लासिफाई करिएगा EMD, इजी मीडियम डिफिकल्ट. इजी मीडियम डिफिकल्ट. इज दैट ओके? इजी वो जो आपको देखते के साथ लग रहा है हो जाएगी, ओके. मीडियम वो जो देखते के साथ लग रहा है अच्छा ठीक है, लाइक कुछ करेंगे तो शायद हो जाएगी, ओके, दैट्स मीडियम. डिफिकल्ट देखते के साथ कोई क्लू नहीं लग रहा है, और डी डाल दो. डिफिकल्ट बाद में आना, सबसे बाद में आना, ओके. Now keep in mind that
you will be awarded the same marks for all the problems that you solve. So you can't prize one problem over other. आप एक प्रॉब्लम को दूसरे प्रॉब्लम के ऊपर प्राइज नहीं कर सकते. So if you solve a difficult problem, you will get the same marks. If you solve an easy problem, you get the same mark. आप difficult solve कीजिए उतना ही marks, easy solve कीजिए उतना ही marks. Why will you solve difficult problems? क्यों आप solve करेंगे difficult problems? Tell me. Do you have any reason? नहीं है ना. And if at all there are inevitable difficult problems कुछ हैं ही जो करनी है, तो आप बिल्कुल बाद में आएंगे. Okay? Always plan your time. First easy ones, then medium ones, then difficult ones. Okay? और easy ones, सारे के easy ones आपको करने पड़ेंगे. Is that okay? Okay, great. So first plan your time. Okay, then don't rush. Of course, like of course, examination hai. We have already laid down the importance of reading the question carefully, examining all the options carefully, evaluating the possible strategies that you might employ to solve the problem, and then eliminating options. Don't rush through the questions. We have said enough, and I'm hoping that you have caught this thing. Jaldi jaldi nahi karna. Okay. Use clues now. Yeah. Now we have talked at length about using clues. In fact, I have even demonstrated that how can you solve these two problems. अब देखिए ना तो मैं उन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ किया लाइक कोई मैथमेटिक्स यूज किया कोई फिजिक्स यूज किया नहीं ना क्या यूज किया कॉमन सेंस try to use that. Okay, if you are at a loss कुछ समझ में नहीं आ रहा we always do that. इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि हम तब भी कॉमन सेंस यूज करते हैं जब हमें समझ में आ भी रही होती है बात. मुझे ये बताइए ना कोई एक प्रॉब्लम है अगर मैं क्लूज यूज करके तीन ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट कर सकता हूं तो मैं क्यों सॉल्व करने जाऊंगा उसको. राइट. व्हाई विल आई. It's not a subjective examination where I will be awarded for the way I wish to solve the problem and just not the means. Right. Then the fourth and very important thing is context-based memories. Yeah, I mean this is quite important. That in fact it so happens that there are certain problems that we have certain memories associated with it. नहीं होता ऐसा like आप कभी गए उस रेस्टोरेंट में गए एंड जब आप ऐसा लगता है आपको ये भूल गए थे इस रेस्टोरेंट को आप जाके जब वहां पे जाके बैठते हैं यू रिमेम्बर लास्ट टाइम जब हम आए थे ना तो हमारे साथ यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में ये हुआ था. राइट. समथिंग लाइक दैट. अ क्लाउन एंटर्ड और कुछ हुआ था. वी बम्प्ड इनटू अ फ्रेंड. जब हम जाते हैं ना उस रेस्टोरेंट में फिर याद आ जाता है. राइट. This is true, right? This is quite established scientifically, might I add, that this context-based recollection is quite an important aspect of your daily life. तो आप प्रॉब्लम में फंस गए हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये याद करने की कोशिश कीजिए ना कि दैट अच्छा लाइक हैव यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम हैव यू सॉल्व दिस आइडिया. अच्छा कौन से इसमें किया था. वाज इट एन ऑनलाइन क्लास और एन ऑफलाइन क्लास. अच्छा टीचर कौन सा था. वो बता रहे थे. मतलब आपको ऐसा लगा कि ये कहीं तो पढ़ा हुआ है. फिर आप पूछोगे टीचर ने करवाया था. ये ऑनलाइन में हुआ था ऑफलाइन क्लास में हुआ था या किसी बुक में देखा था मैंने ऑडियो में देखा था या नोट्स में था या एनसीईआरटी में था. वन यू क्लिक दैट कॉन्टेक्स्ट. आपने एक बार उस कॉन्टेक्स्ट को क्लिक कर लिया ना कि अरे यार ये तो एनसीईआरटी में वहां पे प्रॉब्लम है. राइट. वेल वी आर गुड. आप उसको आइडेंटिफाई करके अनसॉल्व कर लेंगे. राइट. Well, third and the last is of course practice, practice, practice. Can't possibly understate the importance of practice. आप जितनी practice करें उतना अच्छा है. The more you practice, the better that you will get. One little thing that I'll add is that आपको practice कैसे करनी चाहिए ना. आपको practice थोड़ी ऐसे करनी चाहिए कि भाई देखो जैसे ये चीज़ है ये वाली चीज़ है ना. तो अगर 45 मिनट्स का एग्जाम है तो आपको 40 मिनट्स में अटेम्प्ट करना चाहिए. अगर अब 45 मिनट्स का एग्जाम है अगर आप 40 मिनट्स में नहीं करना चाहते 45 मिनट्स का एग्जाम है और 10 क्वेश्चंस है तो आपको 45 मिनट्स में 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए. तो व्हाई डू वी डू दिस. ऐसा क्यों करते हैं अगर आपके दिमाग में आ रहा है क्यों 45 मिनट्स का एग्जाम है तो 40 मिनट्स में करो या फिर 10 क्वेश्चन है तो 12 क्वेश्चन करो. वेल हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी एथलेटिक एंडेवर. आपने किसी एथलेटिक एंडेवर में पार्टिसिपेट किया. सो लाइक I have, in fact, even I play cricket even today as well. You are trained more rigorously and more strenuously than what's required on the day of examination. आपकी जो ट्रेनिंग होती है ना वो कहीं ज़्यादा rigorous होती है compared to जो आपके पास एग्जामिनेशन डे पे अवेलेबल होता है. राइट. And therefore you must inculcate these practices. Okay, great. I'm going to move on. Eventually these 3 A's will decide that how you do how you perform in examinations. Attitude. I think ये जो word attitude है ना like
इट्स वेरी रेलिवेंट एज फार एज लाइफ इज कंसर्न. आपके जो लाइफ में एटीट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंस है. आई ऑलवेज बिलीव दैट आई कैन इज greater than IQ. No, a belief that you will be able to crack the examination, a belief that your sincerity will help you sail through, a belief that your extraordinary effort will produce extraordinary results, a belief that sincerity pays. Right? ये जो एटीट्यूड होता है ना कि भाई एग्जाम देना है, अच्छे से देना है, आई एम नॉट गोइंग टू लीव दीज थिंग्स टू लास्ट मिनट डिटेल्स, आई एम नॉट गोइंग टू लीव दीज cast these things aside. ये नहीं करते हम. Okay. So attitude will eventually help you, just not here, in life as well. The next thing is aptitude. I think aptitude is a very vague term. Uh, of course, a part of aptitude is innate. एक थोड़ा सा part innate है. But a lot of it is cultivated. जब आप practice कर रहे होंगे ना, तो a lot of aptitude will be cultivated. And together, attitude and aptitude will give you the ability to overcome the barriers that you might face in these examinations or your life as well, right? Okay, so now we come to the slide, which will, in fact, I'll try to sort of uh, summarize everything that I have said. So this is a word which will perhaps last you with a lifetime. Yeah, and this will last for a lifetime. If you can sort of recall this, you will be able to attempt all the objective examinations that you might appear in life. हम सिर्फ इस एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहे, आप आगे भी कोई एग्जाम देंगे तो of course like आप इस पे ये कर सकते हैं, है ना. What is the first thing? So this comes from the word swear. The first letter is S, stands for screening. आप पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसमें स्क्रीन करेंगे, ओके, कि भाई क्या लिखा है, which means reading the question thoroughly. Is that okay? Then comes this winnowing and elimination. Now, winnowing का क्या मतलब होता है? Winnowing means to separate the chaff from the grain. नहीं, मतलब ऐसे grain को जब उससे आप अलग करते हैं, उस part को आप winnowing कहते हैं. And that's that idea कि हम question लेके scribble करना शुरू नहीं करते. Question लेके हम क्या करते हैं? We try to form what are our elementary or primordial thoughts over this problem. इस problem को लेके हमारे elementary thoughts क्या हैं? Primordial thoughts क्या हैं? So that process is called winnowing. We are winnowing कि अरे भाई क्या हटाया मैंने, ये हटा दिया, अच्छा ये नहीं, ये टेक्निक काम नहीं करेगी, अच्छा ये नहीं काम करेगी, ये टेक्निक काम नहीं करेगी, okay, this doesn't work, no, this is actually this, that's winnowing. Okay. Then elimination. I think ये winnowing part ये हमारे अंदर का था, okay, like this is something that we have to exercise on our own, right? Elimination क्या है? ये external है, ये इससे तो हम option को eliminate करने वाले हैं, you know. So eliminate the options. आप options eliminate कीजिए, हटाइए जो ठीक नहीं लग रहा है. क्लूज आपको हमने डिस्कस किए, किन क्लूज के थ्रू आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट. देन यू सॉर्ट ऑफ avert this bad habit of falling into the trap. अब इन चीजों को आप avert करने वाले हैं. You don't have to sort of inculcate anxiety in you. आप अपने अंदर anxiety नहीं inculcate करेंगे, इसको भी avert करेंगे. हम usual traps को avert करेंगे. जैसे एक सबसे बड़ी सी बात हो जाती है कभी कभी that students find that they have prepared inadequately for examination or maybe even adequately for examination, और फिर वो एग्जामिनेशन से आखिर दिन पहले ना पूरी रात भर जाके वो एग्जाम दे देते हैं. Don't do this. By doing yourself, you are subjecting yourself to undue stress and pressure which might reflect in the examination, and the effects can be devastating, right? So we are going to avoid all these traps. तो हम ये सारे traps जो है वो avoid करने वाले हैं. Okay. Then read. This is important. Read. अब read क्या करने वाले हैं? Read हम करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर का और अपने आंसर शीट का. Okay. So one of the things that students do is कि भाई पहले ना 20 क्वेश्चन के आंसर निकाल लिए, फिर OMR शीट मार्क किया. I think this is dangerous. And I say this from experience. कितने स्टूडेंट्स ने ऐसा किया है? 20 क्वेश्चन निकाला और फिर उसकी मार्किंग किया. अरे नहीं, ऐसा नहीं करते. What if आपने एक का गलत मार्क कर दिया तो एक का ए हो गया, दूसरे का बी हो गया, तो जिसको बी और ए करना था तो लाइन से पूरी गलतियां आ जाएंगी फिर, क्योंकि आप 20 मार्क कर रहे थे एक लाइन से. डोंट डू दिस. तो आप एक बार में 3-4 करते हैं एंड दैट्स इट, है ना. मतलब 3 सॉल्व कर लिया, तीनों को मार्क कर दिया. मैं तो कहूंगा कि एक सॉल्व कर लो और एक को मार्क कर दो, बिकॉज टाइम तो उतना ही लगेगा ना. आप मार्क करोगे, पहले मार्क करो या बाद में मार्क करो, सो इट डजंट मैटर रियली, राइट.
सो read your OMR sheet. अच्छा, एक पॉसिबल वे ऐसी गलतियों में बचाने का ये होता है ना कि आप रफ में ना कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर मार्क कर लो, कुछ कुछ क्वेश्चंस के। सर अगर सारे कर कर सकते हैं, इतना टाइम है तो कर लीजिए, बट अगर नहीं टाइम है तो कुछ कुछ के मार्क कर लीजिए। जैसे मैं कहूँगा 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, 17 का, 19 का। अगर आपने नोटिस किया तो मैंने सारे प्राइम नंबर्स को मार्क किया है। और जब मैं लास्ट में आंसर देखूंगा ना, तो मैं अपने प्राइम नंबर वाले आंसर से मैच करूंगा कि जो मैंने रफ में आंसर मार्क किया को क्या मैंने वही ओएमआर शीट में मार्क किया है। और तो अगर 2, 3, 5, 7 एंड 11 एंड 17 एंड 19 इन सब के आंसर्स मार्क्स सही हैं, मोर ऑफन देन नॉट मेरे सारे आंसर्स जो होंगे वो सही होंगे, बिकॉज मैंने रैंडम सैम्पलिंग की है। ओके, so read your question paper and read your answer sheet. Okay, now we come to the last slide, and that is that these are the three rules for an examination. तीन rules हैं. First is calmness, will avoid stress. देखो भाई, आप जो एग्जाम लेने जा रहे हो बिल्कुल मुश्किल नहीं है. ओके, दैट्स अ नाइस एग्जामिनेशन, क्वाइट एमिनेबल एट दैट. आप एग्जामिनेशन ले लीजिए, बैठ के आराम से तैयारी अच्छे से करके जाइए. यू विल बी एब्सोल्युटली calm in examination. And if you are calm and if you have prepared yourself thoroughly, then you will concentrate, then you will have the confidence in examination. फिर आप एग्जामिनेशन में ना आपके कॉन्फिडेंस होगा कि भाई ये होगा, है ना. Then the third and most important thing is concentrate. I'll tell you something about concentration. Why concentration is important, why living in the moment is important. देखिए, अभी मैं आपको ये प्रेजेंटेशन दे रहा था ना, इट्स सो हैपन दैट कुछ मेरे पास मैसेज आया ना, जस्ट लुक एट द स्क्रीन, है ना. एंड माई थॉट वॉन्डर्ड कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. ओके, एंड व्हेन माई थॉट वॉन्डर्ड, सो आई वाज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन. तो आई हैड टू रिकनेक्ट दैट बॉडी ऑफ थॉट्स कि मैं क्या आगे बोलने वाला था. एंड दैट वाज जस्ट मोमेंटरी बिकॉज मैंने जस्ट स्क्रीन देखी ना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई डिडंट इवन प्रोसेस द इंफॉर्मेशन. मैंने इंफॉर्मेशन भी प्रोसेस नहीं की, बस मैंने देखा एंड आई वाज डिस्ट्रैक्टेड. एंड then I had to recollect the chain of events which I was going to describe, right? And ulta, मैं आपको बताता हूँ कि that concentration, there was this theorem uh, which was given to our class, and it has a subsequent value attached to it कि नहीं होती थी ऐसी problem generally. So I was a graduate student then, and woke up at 3, sat down with a problem, and with a single purpose in mind that I'll solve this theorem, I'll prove this theorem. And by 8, 5 घंटे बाद मैं सिर्फ उस theorem के बाद सोच रहा था, and I proposed a proof, right? So this is what concentration does, कि अगर आप उस चीज में बिल्कुल involved हैं and you're not thinking of anything else, what it will do is that it will maximize your output. B, it will cut down on the mistakes that you make, that you generally people tend to make because they are sometimes distracted, right? So concentration is absolutely an essential ingredient for this examination. So 3 C's: calmness, confidence, and concentration. And eventually you will see that you will succeed, right? Okay, so that's all about this presentation. So it was great being here, and I'll go over to Vaibhav. And yeah, Vaibhav. Yes, sir. It's indeed a wonderful presentation. In fact, I myself have, learned a lot of basics and nitty-gritties about uh, MCQs. Also, the statement "I can is better than IQ" is something which is, students should look upon. And I'm a firm believer of the same statement as well. Also, I hope students have learned a lot of techniques how to attempt MCQ based questions. Though, MCQs are one of the trickiest questions to attempt, and they are going for MCQ examinations in a week. So I wish all the best to all the students. Do well, score well. If you have any questions, please feel free to park your questions in the chat box. We are happy to take your questions, and the sir is here to answer them. So, sir, one of the students are asking, like, what if I have attempted the question, I have circled the question, and then in the box, in the rectangular box, I have mentioned the question, and then I realized I have to leave this question. So, what should I do Um, in this situation? yeah, so the only perhaps, so of course, देखिए,
The only perhaps recourse out of that could be that maybe you can strike that off the answer in that box. अगर आप अपने बॉक्स के आंसर को स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं, बिकॉज कीप इन माइंड दैट अगर आपने डार्कन किया हुआ है और बॉक्स में कुछ नहीं लिखा है, तो दे विल टेक इट एज दैट यू हैव नॉट अटेम्प्टेड द क्वेश्चन. सो इफ यू कैन स्ट्राइक दैट ऑफ, अगर आप अपने बॉक्स के एंट्री को just strike that off, it means that you have left the question alone, which is absolutely fine. That's one way out of it. Right. So in fact, I would suggest students like you're getting two, options, two chances to make sure that you're attempting that question and you're attempting the right answer. So be very, very careful, very particular about, circling the question and then writing the answer, the option in the box. That's why, because this time it's all manual scanning of the OMR. So be very particular about the same. Sir, one of the student is asking if you can, explain what hash circle is all about. Why do we What have hash? hash circle on the Yeah. OMR? Okay, so as I said, that there's a very novel examination and there's a very extraordinary OMR sheet. So what they have done is that even if you want to leave a question alone, so you will have to mark that the fact that you're going to leave that question alone. And how do you indicate that you're going to leave the question alone? So under that hash column, say if in question number one, against that hash column, if you darken that circle, अगर आपने उस circle को darken कर दिया hash column के जो नीचे है, then it will be considered that you have left the question alone. तो ये consider कर लिया जाएगा कि आपने वो question छोड़ दिया है. Is that okay? Yes. So that hash, as I said, that these people themselves might be programming. So hash stands for numbers. So hash, जब ऊपर में hash लिखा है hash, number one, number two, number three. तो अगर आपने hash 4 को dark कर दिया, it means that you have left aside question number 4. That's what signal you will give to the OMR sheet, right? Okay, so one of the student is asking like, as you are a maths expert and I have, phobia of maths. So how to, inculcate a habit of, attempting maths questions, and how to practice more mathematical questions so that I can improve on my mathematical skills. Yeah. So, okay. So, let me give you a general answer to this question that if you have a phobia of mathematics, then how do you sort of overcome that phobia of mathematics? So, it's a question which I frequently am at the receiving end of, and I realize that there are many students who suffer from the same phobia. But at the same time, I'll tell you something that mathematics is something which is sometimes not presented in the way that it should be, and perhaps that's the reason why people tend to get phobia of mathematics, right? So, what if I told you that look at fingerprints and look at the shape of your ears, and they're same, and they're logarithmic spirals? Does that mathematics interest you? Yes. So, as Euclid said that there is no royal road to geometry, I'll say that the way to understanding mathematics is in fact by solving more and more problems. What students tend to do is that they tend to give up. नहीं ऐसे 2 मिनट किया problem solve नहीं हुई, they say अरे नहीं हो रही यार. That's no. In fact, you solve mathematics, you are learning mathematics when you're not solving the problem. I can send you lots of videos. Vav, I'll tell you something that when I was in my graduate studies, so ऐसा होता है ना कि the pressure of graduate studies can be extremely immense and you tend to buckle up. So our advisor would send us videos in which PhD students, they would sort of release a video of their own and they would say that they are not able to solve problems. But in those moments that they're not able to solve problems, that's the moment when they're learning mathematics. Okay. So people don't give up on mathematics. Mathematics पे ऐसा give up मत करिए. The point is that जब आप प्रॉब्लम कर रहे होते हैं ना और जब आपसे नहीं हो रही होती है ना, वो ही मोमेंट होता है जब आप सीख रहे होते हैं मैथमेटिक्स को, राइट? दैट्स द मोमेंट व्हेन यू आर लर्निंग इट. ओके, सो आई विल से दैट मैथमेटिक्स का फोबिया है ना, प्रैक्टिस मोर प्रॉब्लम्स. नहीं हो रही है ना, परसिस्ट विद इट, थोड़ा और कीजिए, sleep over the problem. That's how you learn mathematics. In fact, that's how you learn anything for that matter. Yeah. One of the student is asking like, I am continuously practicing with the sample papers but still I'm making a lot of mistakes, so how to cope up with it?
I mean, So with the yeah, practice will be the answer. yeah. So first of all, you'll have to identify the mistakes that you're making, right? Mistakes किस kind की है? So is that a conceptual error that you're making? If that is, then perhaps you need to revise on the stuff that you're making repeatedly making a conceptual error on. Two, if you're making a tactical error, आप कुछ tactical error कर रहे हैं क्या? The point is that आज के session के बाद आप पेपर को दूसरे ढंग से अटेम्प्ट कर सकते हैं. Like, can you classify the question as easy, medium, and difficult? First solve the easy ones, then solve the medium ones, then solve the difficult ones. Will that change your score? I think it should. Because अभी मुझे लग रहा है कि अभी तक आप ये करते होंगे कि वन के बाद टू के बाद थ्री के बाद फोर, और उसमें कुछ बीच में मुश्किल सी प्रॉब्लम आ गई, वो भी उसमें आप लग जा रहे हैं, और फिर इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम, एंड देन यू फाइंड योरसेल्फ दैट ओहो अब तो 10 क्वेश्चंस बचे हुए हैं एंड आई हैव गॉट जस्ट 20 मिनट्स, सो व्हाट यू विल डू इज यू विल रश थ्रू दिस प्रॉब्लम्स. ओके. So is that a mistake? Can that be attributed to a lack of coherent strategy, which was sort of absent till this point? अगर ये बात है, तो kindly adopt this strategy that we have discussed in this session. I think that it will help immensely in overcoming the barriers that you're facing now. Yeah. So one of the student is asking, like, if I have attempted a question and then I have written the option in the box, then I realize the option written was wrong and I want to change it. Do we have an option to change it? Uh, Yeah, yeah, but there is no clear answer to this question, that because they don't say anything regarding that. That can you make changes in the box as well? Can you override it, right? So the point is that I'll rather say that be very vigilant. Okay, be very vigilant while you're marking the options. Like, आप ऐसे सोचे ना कि that do you realize that such a question doesn't have any ending? Like इस question का कोई ending नहीं है ना. आप सोचिए. Someone says that कि आपने एक बार गलती कर दी बॉक्स में लिखने में. The other one can say that उन्होंने दो बार गलती कर दी लिखने में, right? And then three times. So a better answer would be that please be very vigilant while you're marking that OMR sheet. एंड आई रादर से कि बॉक्स का ऑप्शन ना वो बाद में लिखिएगा अगर आप किसी क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंट नहीं है तो. इज दैट ओके? मार्क कर देना जो आपको मार्क करना है, बट बॉक्स में जो आंसर है वो बाद में लिखिएगा. इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट अ प्रॉब्लम, कम बैक ऑन द प्रॉब्लम, रिवाइज, एंड इफ यू स्टिल फाइंड दैट दैट्स द सेम आंसर, फिर आप लिख दीजिए. दैट्स so one of the student is asking, should I fill, a sample OMR first and then to fill all the options afterward, or should I go by, filling 5 or 6 questions at a time and then? Yeah, no, I think that you should just go by filling your original OMR sheet, and why you will dispense your very important time in the examination just by filling out a phony OMR sheet, which is absolutely inconsequential. So fill in the original OMR sheet. I'm hoping that आप school में जो pre-board ले रहे होंगे, you will get sufficient practice that you will be accustomed to filling these OMR sheets, right? आप school में जो exam ले रहे होंगे, उसमें OMR sheet आपको मिल रही होगी. You will get accustomed to it. Don't panic. बिल्कुल panic करने की जरूरत नहीं है. I think that you are better served when you attempt the original OMR sheet, which is meant to evaluate you. Right? Though we are bombarded with a lot of questions, sir, Yeah. but it's time. So I would like to culminate this session by thanking you for sharing valuable insights and information on MCQs. In fact, on behalf of entire Air Force Schools management, and on behalf of Ritu ma'am, for allowing us this opportunity to talk about MCQs and integrities about MCQs and do's and don'ts of MCQs with students. I would like to thank Saad Hassan sir for his valuable contribution, Thank insights. you. It's indeed a wonderful session. Thank you so much, sir, Yeah. and have a nice day ahead. Also, all the best, students, for your patience listening, and I hope the session was worthy enough to attend. For more queries, please stay in touch. I mean, you can subscribe this channel. We usually post a lot of informative recordings and sessions on the channel so that you'll get benefited you know in future as well. So thank you so much. It's a Yeah. wonderful session, and I'll take your leave, sir. Thank you. Thank you.